The celebration on the faces of these rural women in Rajasthan encompasses many tales of difficulties faced by them in the past. This village of Sikar district of Rajasthan was once a barren and dry land. Lives of the villagers were full of struggle and hardships. पहले तो बिल्कुल सूखा इलाका था। यहाँ देखने को ऐसा लगता था कि यहाँ कोई शायद निर्जन है, कोई गांव है ही नहीं। इस तरह गांव के खंडर टाइप के मकान दिखा करते थे, कारण कोई यहाँ ठहरता ही नहीं था। कोई कहीं मजदूरियों के लिए चले जाते थे, तो ऐसा लगता था कि गांव खाली हो गया है। Water is necessary for origin and preservation of life. This village had no natural or artificial resources of water. Life was difficult here. Taking the initiative as a change agent, the PHD Rural Development Foundation came up with innovative idea of rainwater harvesting in a unique way. जब से PHD ग्रामीण विकास संस्था जब गांव में आई है, इसने आके अपने यहाँ अपने चेक डैमों का जो निर्माण स्टार्ट किया। हमारे यहाँ चेक डैम में पानी आने से जो गांव में जो लोग पलायन करते थे, वो लोग अब गांव में रहने लग गए हैं, और उससे यहाँ कृषि होने से उनकी जो इनकम आय बढ़ी है, उससे उनका जो स्तर है वो ऊंचा बढ़ा है। हमारे यहाँ पहले एक फसल बाजरा होती थी, आज हमारे यहाँ फसल गेहूँ, सरसों, जौ और चना भी पैदा होता है। The PHD Rural Development Foundation is doing remarkable efforts for water conservation. The check dams created by PHDRDF in these arid areas has enabled the farmers to reap 3 crops in a single year compared to earlier days of single or no crops. मेरा नाम गोवर्धन शर्मा है। मैं करीब 15 साल से PHD ग्रामीण विकास संस्थान के साथ काम करता हूँ, पानी प्रबंधन का, जल संरक्षण का। और इस समय में करीब मैंने मेरे देखरेख में 200 चेक डैम संस्था के सहयोग से बने हैं। आप देख रहे हैं जो चेक डैम बना है, इसके आसपास पहले रेत के टीले होते थे, आज यहाँ पानी है और लोगों के कुओं में सभी जगह ये पानी रिचार्ज हुआ है। इससे पेड़ पौधे भी हुए हैं, जंगली जानवरों को भी पानी मिला है, भोजन मिला है। गांव के लोगों का तो एकदम जीवन ही बदल गया है। उनको तो खेती में पहले तो सारे लोग बाहर रहते थे, बोरी डालते थे, फलदारी करते थे, आज सब गांव में आ गए हैं और अपनी खेती संभालते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। PHD Rural Development Foundation works with the motto of reach the unreached, and the foundation has been able to achieve this through its strong community connect. PHDRDF implements integrated rural development projects through comprehensive participatory need assessment of the communities, develops sustainability programs, and hands them over to the people for further continuous development. The Rural Development Foundation, or RDF, of the PhD Chamber of Commerce and Industry has rendered yeoman service over time to the marginalized sections of our society, particularly in the rural areas. Our activities are mainly in the sectors of water conservation, healthcare, sanitation, education, and skill development. Many of the spheres of our activity dovetail with national objectives and the global programs called Millennium Development Goals and Sustainability. A participatory and community-based development approach is followed by RDF in collaboration with village panchayats, NGOs, state and district authorities, and other stakeholders. RDF finalizes the projects after consultation with governing body members through comprehensive and detailed discussion. The needs and priorities of the communities are assessed independent of the business locations of the donors. Projects are systematically executed, thereby impacting to create a holistic and sustainable development of communities. PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री भली भांति जानता है कि आर्थिक जिम्मेदारियों के अलावा इस चेंबर की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी है, और इन सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए 1981 में PhD रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति और विकास कर रहा है, लेकिन जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं ये अभी भी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और ख़ास करके यहाँ पर जो महिलाएं और बच्चे हैं
इनको बहुत सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन है, ये ध्यान में रखते हुए अपने कार्य पे जोर दे रहा है और वो आज के दिन वाटर कंजर्वेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए इनमें अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। मेरे हिसाब से रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं उनको बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जो वो कार्य कर रहे हैं उसको और बड़े रूप में करें, ताकि सबका विकास जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है वो पूरा हो। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। The objectives of the PHD Rural Development Foundation are conservation and restoration of water for optimal utilization of natural resources and for daily availability of water through rainwater harvesting structures and community ponds using watershed technologies and practices. Providing healthcare and sanitation facilities with emphasis on women and children through PHDRDF Arogya programs, using mobile health van services, generic and specialized health camps, construction of toilets in schools and communities, and awareness generation regarding safe drinking water, hygiene and sanitation. Empowering men and women through training and capacity building for financial literacy and market-linked skill development courses, developing communication skills, soft skills and personality development, entrepreneurship skills for alternate livelihood, and mobilizing women in self-help groups. Sensitizing and promoting need for education amongst educationally weaker sections of the society. The best thing in PHD Rural Development Foundation's work is the impact their projects have created in the lives of its beneficiaries across India. From a village boy roaming in the streets to an educated boy in the school, winning awards, Sunil of a poor family in Sukhrali village is an inspiration to other children in his village. It represents the inclusive approach of the foundation. One of the focus area of PHD Rural Development Foundation is empowerment of women and adolescent girls in the distant villages through skill development and livelihood projects and programs that has generated self-confidence among these girls, such that these girls have now started earning and supporting their families. मेरा नाम प्रिया राजपूत है। मैं यहाँ अकाडमी स्किल में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखा है। मेरा ड्रीम था कि मैं एक ब्यूटिशियन बनूं और मैं अपने घर पे एक छोटा सा पार्लर चलाती हूँ, जिसकी वजह से मैं 8 से 10 हज़ार रुपये कमाती हूँ और मेरा सपना पूरा हुआ। मोहम्मदपुर गांव में PHD सेंटर है जिसमें मैं सिलाई सीख रही हूँ। मैंने 12th किया है और मैं कॉलेज नहीं जा पा सकती क्योंकि मेरे परिवार को गरीबी की वजह से, इसलिए मैं सिलाई कर कर अपने परिवार की कुछ अपनी भी मदद करती हूँ और कुछ परिवार की भी। मुझे कुछ महीने ही हुए हैं सिलाई करते हुए। मैंने PHDRDF से कंप्यूटर का कोर्स कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रही हूँ और यह कोर्स पूरा होने के बाद मैं बैंक में अप्लाई करूँगी, जहाँ मुझे कंप्यूटर कोर्स बहुत ही मदद करेगा। मेरा नाम श्रवण कुमार है। यहाँ आपका कैंप लगता है, यहाँ जो है फ्री जाँच हो जाती है और फ्री दवा भी मिल जाती है, तो मुझे बहुत आराम मिलता है। जब आपका कैंप लगता है मैं दवा बराबर लेने आता हूँ। PHDRDF supports corporates to develop their CSR policy framework, identify the areas of intervention for rural development and prepare sustainability reports along with the highlighting CSR activities. Rotary India Water Conservation Trust, we started way back in 2004, and one of our major objectives is to promote rainwater harvesting. And it's indeed a pleasure for us to that for the last 10 years, when we came across the PHDRDF Foundation, I mean, this relationship has worked very well, and in the process, we have been able to do, as of date, 82 check dams, which have benefited more than 400,000 people. The beauty is that in this scheme, there is an involvement of community which is very important, because that brings in the ownership of the project, and project then sustains for a long term. And PHD that way is very well fully equipped to play that role. And our Rotarians from France, from Germany,
and our other partners like Pranic Healing Foundation and the Mormon Church, all of them are very happy with this relationship. And I'm sure we will continue this relationship for a long time and will benefit perhaps few million people of Rajasthan. Thank you. All my colleagues in the PHD's Rural Development Foundation are very dedicated and they're imbued with the spirit of social service. I can assure you, if you make us your partners for CSR activities, we will do a great job. For over 3 decades, PHDRDF has been proactively involved in the socio-economic development of the marginalized communities of India and making them self-reliant and happier than ever. PHD Rural Development Foundation. Empower villages, empower India.